हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर जून 2010 का। ठीक है, तो ये 2010 का पेपर, ये लास्ट पेपर है जो ऑनलाइन अवेलेबल था। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके अलावा 2011 2012 के हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, और 2022 का पेपर मैंने सॉल्व कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। Okay, so let's start this paper. Okay, so in this paper they you can see there are numericals. In question number 2 there is one numerical. In question number 4 there is one numerical, and in question number 6 there is one numerical. Okay, so we solve all these three numericals, and you find आपको ऐसे ही similar numericals आपके आगे वाले जो पेपर आएगा उसमें भी मिल सकते हैं। तो हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इनको। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 2 मीटर प्लेस्ड वर्टिकली इन वाटर in such a way that the center of the plate is 3 meter below the free surface of water. Okay, and find the position of center of pressure. Okay, so ये एक केस है, एक सर्कुलर प्लेट है। लेट मी ड्रॉ दिस। ओके, सो ये एक वाटर की सरफेस है और ये एक सर्कुलर प्लेट है, एंड दिस प्लेट इज लाई 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। सो दिस पॉइंट लाई 3 मीटर। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सरफेस वर्टिकली किसी फ्लूइड में सबमर्ज की जाती है तो उस केस में जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो जी वाई ए सी। ओके, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज द acceleration due to gravity, y is the position of center of this uh, body from the surface। ठीक है, ये एक सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर से फ्री सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी y होगी, और ए सी क्या होगा, इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर सपोज एक स्क्वायर होता और इसको हम सबमर्ज करते हैं तो इस केस में y क्या होता, इस ये एक स्क्वायर है जिसका डायमेंशन सपोज 3 क्रॉस 3 है, और इसको हमने सपोज 4 मीटर तक सबमर्ज किया हुआ है, तो इस केस में y कितना हो जाएगा, y होगा, इस सरफेस का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 1.5। तो जो ओवरऑल हमारा y होगा, वाई सी जिसको भी हम लोग कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, 4 + 1.5। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डेंसिटी है वो किसकी लेनी है हमें, फ्लूइड की जिसमें सबमर्ज किया गया है, क्योंकि जो इसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा, वो फ्लूइड ही लगाएगा। ओके, सो now what is the density of the fluid, it is 10 cube because it is given water। Okay, what is the acceleration due to gravity is 9.81। what is y, y is 3, and what is the area, it is a circular plate, so what is the area of circle, it is pi by 4 d square। what is the diameter, it is 2 meter, so 2 square। Okay, so you solve it and you will get a force of 92.410 kilonewton। Okay, now let us see the second part of this question, find the position of center of pressure। now what is center of pressure, center of pressure, center of pressure is the point at which this force acts। ओके, अब ये जो फोर्स है आपका, ये वाला फोर्स, ये इस बॉडी पे किसी पॉइंट पे लग रहा होगा, और वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो अगर ये डिस्टेंस सपोज वाई सी है तो वो एक पॉइंट पे लगता है जिसको हम लोग वाई पी कहते हैं। So suppose this force act at yp. So I am drawing it by another pen. Okay, so this is the line. This force act at, so this is yc, this is yc, but this force act at, let me draw it more clear. Let me delete this. Okay, let me delete this also. Okay, so
Let me use this. Okay, so this is yc, and yp lies somewhat below this yc. Okay, and this is the point at which this force act. Now how we calculate yp? Yp is equal to yc plus ic upon ayc. Okay, now what is yc? Yc in this case is 3 meter. Okay, 3 plus what is ic? Ic is the moment of inertia of this circular plate, and moment of inertia of circle is pi by 64 d raised to the power 4. Okay, so it will come pi by 64 d raised to the power 4. What is the area of this plate? Is pi by 4 d square into yc is 3. Okay, so we can write this equation like 3 plus this pi can get cancelled, and this 4 can also cancel this 16, so it will become, and this d square can also cancel that, so it will become d square by 16 into 3. Now what is the value of d? D is 2 meter. Okay, so it will become 3 plus 2 square by 48. Okay, so you solve it, it comes out to 3.083. Okay, it comes out to 3.083 meter. Okay, so this force will act at the point of 3.083. So what are your answers? Total pressure. This is total pressure force. Okay, do not get confused. जहाँ पे भी ये लिखा हो टोटल प्रेशर, इसका मतलब है टोटल प्रेशर फोर्स. टोटल प्रेशर फोर्स कितना है? 92.410 kilonewton. And what is the position of center of pressure? It is 3.083 meter. Okay, hopefully you understood this numerical. Okay, let us see another numerical. Let us see this numerical. Water flowing through a pipe having diameter 20 centimeter and 10 centimeter at entrance and exit section respectively. The rate of flow through a pipe is 35 liter per second. The entrance is 6 meter above datum, and exit section is 4 meter above datum. Okay, and if the pressure at entrance is 40 newton per centimeter, and find the intensity of pressure at exit. Okay, so what we have to do, we हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक सेक्शन दिया हुआ है जिसका ऊपर में डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर. Okay, and this diameter is 20 centimeter, and this is a tapering kind of session. Okay, so let me draw it again. I think there is some problem with this thing. Okay, I hope it will work now. Okay, so this section is 20 centimeter, and the section at the bottom, this section is 10 centimeter. Okay, and the height. Okay, let me delete this. Okay, just wait. Okay, so this height is 6 meter above datum. The entrance is 6 meter above datum. Okay, so this height is 6 meter, and the bottom is 4 meter. Okay, so this distance is 4 meter, and the pressure at entrance is 40 newton per centimeter square. Okay, so pressure at this point is 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और हमें क्या दिया हुआ है? फ्लो रेट. फ्लो रेट कितना है? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 35 लीटर. ओके, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे v1, और यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे v2. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? फ्लो रेट इज इक्वल टू a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. ओके, so what is a1? A1 at this point is, so this is 35 liter, so we can convert it into meter cube. It is 35 liter per second. Okay, 35 liter per second, so we can convert it into meter cube per second. तो it 10 raised to power minus 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. Now what is area at inlet? It is pi by 4 into
0.2 square into V1 is equal to area at outlet is pi by 4 into 0.1 square into V2. Okay, so we solve it one by one. तो हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें V1 कितना मिल जाएगा? V1 comes out to be 1.11 meter per second. Okay, so V1 comes out to be 1.11 meter per second और V2 कितना आ जाएगा? V2 आ जाएगा 4.45 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। ओके, सो वी अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2। So what is Bernoulli equation at point 1 and 2? It is P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2। ओके, यहाँ पे एक हेड लॉस भी आता है बट हेड लॉस इज ज़ीरो। ओके, हेड लॉस इज ज़ीरो। नाउ व्हाट इज P1 अपॉन रो जी? P1 हमें कितना दिया हुआ है? 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर एट एंट्रेंस दिया हुआ है 40, सो वी पुट वैल्यू हियर 40 into 10 raised to the power 4। Okay, so it is centimeter square, so we convert it into meter square, so it will become 40 into 10 raised to power 4 divided by rho g. Density is, it is water, so density is 10 cube into 9.81. Velocity at inlet is 1.11, so we write 1.11 whole square by 2 into 9.81. And what is Z1? Z1 is 6 meter. Okay, so entrance कहाँ पे लाई कर रहा है? 6 मीटर पे। So Z1 is 6 meter is equal to P2 हमें निकालना है, P2 upon rho g plus V2 स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 4.45, so 4.45 स्क्वायर by 2g प्लस Z2 कितना दिया हुआ है हमें? 4 मीटर। So this is Z2 and this is Z1. Okay, plus 4. Okay, so now we try to solve it, and if you solve it you will get P2 is equal to you try to solve this equation, and once you solve, so let me write them individually. So first okay, let me write it individually. Okay, so P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2. Okay, so we put the value of P1, it is 40 into 10 raised to the power 4 upon 10 cube into 9.81 plus V1 is 1.11 whole square upon 2g plus Z1 is 6 is equal to P2 हमें निकालना है, P2 अपॉन रो जी प्लस V2 कितना दिया हुआ है हमें? हमने कितना निकाला था? 4.45 होल स्क्वायर अपॉन 2g plus Z2 is 4. Okay, so when we solve this equation, when we solve this value, we get 4.077 plus when we solve this value, we get 0.0627 plus 6 is equal to P2 upon rho g प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1.00 प्लस 4. Okay, now it is easy for you to calculate P2. Okay, so what is P2 upon rho g? You put all the values aside, so it comes out to be 5.1327. Now what is pressure? P2 is equal to multiply by rho into g, it will 10 cube into 9.81, so it will become 50.35 kilonewton per meter square, or you can write it 5.0
Newton per centimeter square. Okay, so pressure at entrance is 40 and pressure at exit is 5 Newton per centimeter square. Okay, so this is your answer. Okay, so hopefully you like this video. The rate of flow is given 35. So first rate of flow से हमने velocity निकाल ली और फिर उसके बाद बर्नौली इक्वेशन से प्रेशर निकाल लिया. Okay, so hope you like this video. Now let's solve the third numerical. A fluid flow is given below. इज गिवन बाई, हमें एक फ्लूइड का फ्लो दिया हुआ है वेलोसिटी के टर्म्स में. हमें देखना है कि ये स्टीडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है कि नहीं है. ओके, सो दिस वी हैव टू चेक. ओके, सो स्टीडी इनकम्प्रेसिबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी सॉल्व द कंटिन्यूटी इक्वेशन. डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड. अगर ये ज़ीरो आ जाता है तब तो ये पॉसिबल फ्लूइड फ्लो है, अगर नहीं आता है तो फिर ये नहीं है. u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u है हमारा एक्स स्क्वायर वाई, v कितना है, v है वाई स्क्वायर z और w कितना है, w है हमारा माइनस 2x वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर. ओके, so we differentiate it with respect to x, it will become 2x y. Okay, plus differentiate this with respect to y, it will become 2yz, and differentiate this with respect to z, it will become minus 2xy plus 2yz. Okay, so this get cancelled and this get cancelled. Okay, it comes out to be 0. Hence it is proved that it is a possible flow. ओके, सो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ये पॉसिबल फ्लो है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट पॉइंट 2,1,3. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट द पॉइंट 2,1,3. ओके, सो वेलोसिटी एट 2,1,3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज यू, यू इज इक्वल टू x square y. U is equal to x square y. Now what is the value of u at point 2 comma 1 comma 3? It is 4. Okay, now similarly, what is the value of, okay, so what is the value of v, v given is y square z. Okay, so v will become let me, so v is y square z, so it will become what is the value of v at 2 comma 1 comma 3? It will become 3. Okay, and what is the value of w, w is minus 2xyz square. It is 2xyz plus yz square. Okay, so we put the value of 2 comma 1 comma 3 at this point, it will become minus 2 into 2 comma 1 comma 3 plus y कितना दिया हुआ है 1 और z स्क्वायर कितना दिया हुआ है 3, it is 9. Okay, so it is 2 to the 4 13, uh, it is 9, so it will become minus 3. Okay, so it comes out to be um, 21, sorry. Okay, it comes out to be minus 21. Okay, so you can solve it also, it is 2 into 2 into 1 into 3 plus 9. Okay, so 21. Okay, so now what is the velocity, so it will become, so I will write it with another pen. So it will become under root of 4 square plus 3 square plus minus का 21 square. Okay, so you solve it, you will get, it is 4 square plus 3 square plus 21 square. Okay, so you take under root, it comes out to be 21.58 meter per second. Okay, so what is the velocity at point is, it is 21 0.58. Okay, now let us see how to calculate acceleration.
What is the acceleration? Acceleration is equal to ax I cap, ay j cap, or az k cap. Okay. Now how we calculate ax? Ax is equal to u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z. अब हम u की वैल्यू रख देंगे. u कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई. सो एक्स स्क्वायर वाई del u by del x इज 2xy प्लस v कितना दिया हुआ है हमें? वाई स्क्वायर जेड. वाई स्क्वायर जेड del u by del y कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. ओके. del u by del y कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. ये है ना u हमारा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. प्लस u में कोई z का फंक्शन तो है नहीं, ये u में कोई z का फंक्शन तो है नहीं, तो डेल u बाई डेल z ज़ीरो हो जाएगा. तो w के साथ भी हमें w इंटू ज़ीरो कर देंगे, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो वी राइट इट 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z. Okay. Now we put the value in this point. Okay. So now we put value in this point, acceleration ax at point 2 comma 1 comma 3. So it will become 2 into 2 cube into 1 plus 2 square into 1 into 3. Okay. So it will 16 plus uh, 12, so it will become 28. Okay, so आपको एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट मिल गया. Similarly we calculate ay. Now what is ay? Ay is u del v by del x plus v del v by del y plus w del v by del z. Okay, is equal to u कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर वाई, और डेल v बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा? डेल v बाई डेल एक्स हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्स का कंपोनेंट नहीं है. प्लस v कितना है हमारा? वाई स्क्वायर जेड एंड डेल v बाई डेल वाई. डेल v बाई डेल वाई कितना हो जाएगा? 2yz इंटू 2yz प्लस w हमारा कितना है? w है हमारा ये, तो w को हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस का 2xyz plus yz square multiplied by del v by del z. Okay, so what is the value of del v by del z? It is y square. We write it again. It will become 2y cube z square, and it is minus 2x y cube z minus y cube z square. Okay, so this and this term will get cancelled. It will become y cube z square minus 2x y cube z. Okay, so we put the value of ay. Okay, so I'm writing it here. Ay is equal to at point 2 comma 1 comma 3, so it will become 9. Okay, minus 2 into 2 into 3. Okay, so it will become 9 minus 12, it will become minus 3. Okay, so you get ay, the y component of acceleration is minus 3. Okay, now we calculate the z component of acceleration. Okay, so I'm writing it here. Now what is the z component of acceleration? Az is equal to u del w by del x plus v del w by del y plus w del w by del z. Now what is w? I am writing it here. It is minus 2xyz plus yz square. yz square. Okay. So what is u? I am writing it here so that हमें याद रहे. u कितना है? x square y, x square y, और v कितना है हमारा? y square z. So we put it here. X square y. Now what is del w by del x? It is become minus 2yz. Okay.
प्लस v कितना है वाई स्क्वायर जेड. नाउ व्हाट इज डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, इट इज माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर. ओके, प्लस डब्ल्यू, इसको हम वैसे लिख ले रहे हैं माइनस टू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर. एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड कितना हो जाएगा, ये माइनस का है यहाँ पे ध्यान रखिएगा. और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड ये भी माइनस का होगा, टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड. ओके, आप इसको एक बार करके देखिएगा, आपका ऐसा ही बनेगा. ओके, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. ये जगह माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड. ओके, इट विल बिकम माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड इट विल बिकम वाई स्क्वायर जेड क्यूब. ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, और पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा फोर एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर जेड क्यूब. ओके, so now we solve this equation. Okay, so once we solve this equation, what we get, let me see what when we solve this equation. Okay, so this is x square y square z and this is x square y square z. Okay, so when we try to solve this, this thing gets cancelled and हमें क्या मिल जाएगा, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z. Okay, so I'm writing it with another color so that you identify it. So this is the first term we get. Then x y square z square and this is x y square z square. Okay, so this term gets cancelled. Okay, एंड दिस टर्म ये सिमिलर है, तो ये हमें मिल जाएगा. इसको हम जोड़ के लिख लेंगे, ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर जेड क्यूब और ये हो जाएगा फोर एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फाइनल equation which we get. Okay, 2x square y square z plus uh, uh, 4x y square z and 3. Okay, so this is let me check it. It is fine. Okay, this will come with a minus sign. Okay, so here यहाँ पे एक minus आएगा. Okay, because this is positive and these terms are negative. Okay, so this is negative and this is positive. Okay, so we get a positive y square z cube. Okay, so this is how we got. Okay, so let me delete this. Okay, so this is what we get. Okay, so अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए जेड में. ठीक है, we put the value of 2 comma 1 comma 3. Okay, so when we put the value, we get 2 into 2 square into 3 plus 1 into 3 cube प्लस फोर इंटू टू इंटू वन इंटू नाइन. ठीक है, मैंने वैल्यू रख दी है, आप भी रख के देख लीजिएगा. सो इट कम्स आउट टू बी, you put the value, it comes out to be, let me solve this, uh, just wait. So it is coming 105. Okay, so you also check it. No, it is whole cube. Okay, it is not a square, it is whole cube. So 2 into 2 square plus 3, just wait, into 3 plus 3 whole cube plus 4 into 2 into 9. Okay, so it comes out to be 123. Okay, finally it comes out to be 123. So what is the component of acceleration? So component of acceleration A is equal to, so it will become A is equal to 28 I and in terms of y it is minus 3 j and 123 a. So this is your answer, this is your final acceleration. Okay, and if you want to calculate in terms of magnitude, so you can do magnitude also. It is 28 square plus 3 square plus 123 square. Okay, so you will do it that this way also. Okay, so hopefully you like this paper.
solution. If you like it, you can like my channel, subscribe my channel for further question paper updates. Okay, thank you.